Yes, Jai Hind student. Now, in this video, we will study about the chemical properties of acid. About the chemical properties of acid. This is a picture. This is a simple diagram of something. Now, I will disclose what is happening here. So, first of all, the first property is the reaction with metals. Acids react with metals. React with metals. Now, acid reacts with metals, then what it forms? The basic question is what it liberates. Now see, the most important reaction for the laboratory purpose is zinc reacts with sulfuric acid. Now H2SO4. Now H2SO4, which type of H2SO4 you will use? The basic question is here, because H2SO4 can be of two types, that is aqueous and one is concentrated. So here you will use aqueous. It means this H2SO4 contains maximum amount of water also along with pure acid. Okay, so it is acid because we have already seen in previous video that H2SO4, HCl and HNO3 when remain in aqueous medium, it reacts with water and forms hydrogen ion. Okay, now this zinc reacts with sulfuric acid, and then what it forms? Now see, zinc sulfate ZnSO4 and hydrogen gas. This is hydrogen gas. So this reaction shows कि acid generally reacts with the metals and forms its salt as well as hydrogen. So the first learner, you should know that zinc sulfate, this is a salt. Okay, this is a salt. ZnSO4, it is a salt and hydrogen is a gas. तो एक प्रॉपर्टी हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है. सपोज दैट इफ जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉट हाइड्रोजन क्लोराइड, then what it will form? Again you will write zinc chloride ZnCl2 plus hydrogen gas. Okay, now zinc chloride is what? It is a salt. तो आपको बैठे बैठे सॉल्ट भी बन रहा है, सॉल्ट का भी पोर्शन पढ़ना ही है. तो सॉल्ट ऐसे भी बना सकते हैं, देख सकते हैं कि मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनी अदर एसिड इट फॉर्म्स अ सॉल्ट. बिकॉज जनरली हम लोग एक रिएक्शन जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है? दैट इज एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल इज ए व्हाट इज एसिड? दैट इज H2SO4. सपोज दैट ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखिए H2SO4 एसिड. ओके, now it reacts with base. Suppose that we are taking NaOH, ये base हो गया. then it forms it, ये दोनों आपस में react करके क्या बनाएंगे? Na2SO4 and water. देखिए यहाँ पर बन रहा है. now see, sodium sulfate is formed here. this is a salt. okay, now you have to balance this reaction, just add 2 here and then the reaction will get balanced. Now see, sodium sulfate, zinc chloride is just an example of salt. So whenever you are saying the any reaction, you should find out everything कि zinc है तो है, what is this, what is the chemical properties of zinc, और इसका physical property क्या है? तो zinc is a metal granules. okay, sulfuric acid, a physical status क्या है? that is in the form of aqueous, it is in the form of liquid. okay, and zinc sulfate in the form of solution, it remains in the form of solution in aqueous watery form में. सॉल्ट है बट आपको टेबल सॉल्ट की तरह, नमक की तरह ये नहीं निकल जाता है कि टेबल सॉल्ट में जैसे हम रखते हैं नमक वाइट कलर का क्रिस्टल्स, उस तरह ये छन के बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है. इट रिमेन्स इन द फॉर्म इन द लिक्विड एंड
इट इज़ द हाइड्रोजन गैस। तो गैस मीन्स आप यहाँ जी लिखिए, जी फॉर शोइंग दैट इट इज़ अ गैस, और अगर आप अप एरो दिखा रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ गैस। नाउ अगर आप ये रिएक्शन करके देखना चाह रहे हैं लेबोरेटरी में, तो ये आपका एक पूरा सेटअप तैयार करना होगा। दिस इज़ अ स्टैंड, यू कैन सी दिस इज़ अ स्टैंड एंड दिस इज़ अ फनेल। ये आप देखिए कि ये कोनिकल फ्लास्क हमने लिया, कोनिकल फ्लास्क का अरेंजमेंट रखिए आप, and this is a funnel, okay, and the long end of the funnel is already inside the conical flask. So what is the use of this funnel? What is the use of this long end funnel? So long end funnel, we use it to drop dilute sulfuric acid, okay. Just you have to add dilute sulfuric acid from here because it is already airtight, okay. And here you see that this is the outlet, एक एंड है देखिए आपको दिख रहा है, दिस इज द आउटलेट एंड दिस आउटलेट जस्ट एंटर्स इनटू द बीकर एंड दिस बीकर कंटेन्स वाटर, ओके। नाउ कंप्लीट सेटअप में just before packing this you have to keep the zinc granules at the bottom of this funnel। ये देख रहे हैं, ये वाले फनेल में फनेल बोल रहे हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क में you have to keep the zinc granules। now zinc granules when reacts with the sulfuric acid, dilute sulfuric acid, then dilute sulfuric acid you have to add here। now when you add dilute sulfuric acid, then slowly it reacts with it zinc granule के साथ। this reaction will takes place, zinc reacts with sulfuric acid, then zinc reaction and zinc and sulfuric acid both reacts with each other। then in this solution what is forming here? So in this solution zinc sulfate is forming, so zinc sulfate remained in this area only। but what happens to this hydrogen gas? तो हाइड्रोजन गैस देखिए, आपको हाइड्रोजन गैस बनते हुए निकल रहा है, देखिए बनना स्टार्ट हो गया हाइड्रोजन गैस। नाउ दिस हाइड्रोजन गैस कम्स थ्रू दिस आउटलेट, ये हमने आउटलेट बना रखा है, ठीक है। अब नाउ दिस एंटर्स इनटू दिस एरिया, दिस ट्यूब, एंड इट एंटर्स इनटू द बीकर, देखिए आपको वो बीकर पे बाहर आ गया, एंड दिस बीकर इज फिल्ड विद वाटर एंड द एंड ऑफ दिस टर्मिनल पार्ट ऑफ दिस आउटलेट इज इनसाइड द वाटर। तो आपको क्या होगा कि यू विल सी द बबल्स, यू विल सी इन द वाटर कि बबल फॉर्म कर रहा है, ओके। एंड फ्रॉम दिस बबल द गैस सिंस इट इज लाइटर, सो ये हल्का गैस होने से क्या होता है, बाहर निकलना स्टार्ट होता है। देखिए यू कैन सी दैट द गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस बीकर, दिस बीकर। तो ये गैस को आप बेकार मत जाने दो, यू हैव टू टेस्ट वेदर दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस और नॉट। तो आप क्या करो, एक जलता हुआ मोमबत्ती जो है, जलता हुआ मोमबत्ती, द बर्निंग कैंडल यू जस्ट कीप हेयर, you just keep this burning candle in front of this gas। suddenly when the bubbles, that is the air, उसमें जो हाइड्रोजन बबल्स हैं, when it comes in contact with this burning candle, soon it blast forming the pop sound। तो पॉप साउंड इसका जो है बेसिक, यह पॉप साउंड के जरिए पटाक पटाक करके जो है ये फटना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये फटेगा, पटाक पटाक का आवाज़ आएगा, तो पॉप साउंड का जो ये आवाज़ से फटा, तो दैट शोज दैट दिस गैस इज अ हाइड्रोजन गैस, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ बर्निंग गैस, इट इज़ इनफ्लेमेबल गैस। जब ये कांटेक्ट में आएगा कैंडल के, तो ये जल जाता है। तो दिस शोज दैट कि वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट विद द केमिकल रिएक्शन, proving that this reaction is happening actually, it is not only theoretical but in practical also this is happening, that zinc reacts with sulfuric acid and zinc sulfate and hydrogen gas is formed। like that if you are if you want more reactions to continue, acids react with bases, acid reacts with bases, acid reacts with bases, then you can take iron also। suppose that if you are taking iron Fe plus HCl, suppose that FCl HCl, suppose that you are taking Fe plus HCl, then what will be the reaction? Similar type of reaction will take place, ferrous chloride and hydrogen gas, very simple। now you have to balance this reaction, Cl2 2Cl, so then 2 put the 2, then 2 hydrogen is there, 2 hydrogen, it is balanced reaction। so iron also reacts with dilute hydrochloric acid, then it forms
ferrous chloride and hydrogen. Then it is what? It is ferrous. It is ferrous chloride. It is ferrous chloride and it is a salt. Once again, it is a salt and it is a gas. So if you want to test the nature of the gas, whether it is hydrogen or not, then same experiment you have to do, and you will listen the pop sound. Okay, suppose that if you have zinc, if you don't have zinc or iron, then you may have magnesium with you, then you can react with it with H2SO4. Once again, H2SO4, then what happens? This magnesium will react with sulfuric acid and it forms MgSO4 and hydrogen gas. Again, MgSO4 is a salt. Why I am just giving a stress over this type of term? Because just after that I will show you how salt is formed. So there are different ways by which we can see the formation of salt in the chemical reaction. So it is not that ki acid reacts with base and salt and water is formed. It is the neutralization reaction. It is generally the most demandable reaction. But here in this simple reaction also, where acid react with metal also, acid simply react with metal also, you can see the formation of salt. So it is metal and it is salt. So it is, you can say it is a metal salt. You can say it is a metal salt. Okay. The metal salt is formed along with the hydrogen. So if you want to test the presence of hydrogen in the form of gas, then what type of test you have to conduct? You have to just bring the burning candle in front of it and then it will blast and it will form a pop sound. So in this way you have seen that acids react with metals and these are the reactions. So once again the revision is that, like that, revision is must. So I am writing first zinc plus sulfuric acid H2SO4, then it forms ZnSO4, zinc sulfate, salt and hydrogen gas, simple. Now iron plus sulfuric acid, now it forms iron sulfate, FeSO4 plus hydrogen, simple. Now Mg, if it is reacting with H2SO4, now this is form MgSO4 plus hydrogen. So suppose that if you are using this, you can change this acid also. So now changing this acid, then what type of salt is formed? So as per the radical present, so it is called radical, है ना. एसिड का ये जो सेकंड पार्ट होता है इज कॉल्ड रेडिकल, है ना, वही रेडिकल इसमें जाते हैं. सपोज दैट कि आई एम अगेन टेकिंग जिंक के जगह सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम ले रहे हैं HCl, है ना, जिंक प्लस HCl, देन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट विल फॉर्म it form zinc chloride plus hydrogen, but hydrogen is common here, but only if you are changing the acid, then only the formation of salt will get changed and you have to balance it simply. तो zinc chloride it is called salt. आयरन लेंगे तो आपको क्या बनेगा, Fe प्लस HCl बराबर FeCl3, है ना, या FeCl2, जब भी जैसा भी जरूरत पड़े. हाइड्रोजन तो फेरिक क्लोराइड है, कभी हम फेरस क्लोराइड बोलते हैं, कभी फेरिक क्लोराइड बोलते हैं. ओके नाउ तो यहाँ पर अभी आप फेरस क्लोराइड ही रखो, फेरस क्लोराइड के साथ बैलेंस करना आपको आसान होगा. इसके बाद Mg का काम करो, Mg प्लस HCl, देन व्हाट हैपन्स, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन इज फॉर्म. देखिए कि आपको ये सब कुछ क्लियर होते जा रहा है कि आपको क्या होना है, कैसे बनाना है, वो देख रहे हैं आपको. तो इस तरह से आपको हम समझा सके हैं कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स एंड it forms salt and hydrogen gas, and how we can test the presence of hydrogen with a simple experiment of having the pop sound, है ना. पॉप साउंड के जरिए हम इसको ये कर सकते हैं. ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर to prove that there is a gas hydrogen is liberating here in this reaction. Okay, in the next video we will see the another reaction, that is another chemical property of acid, step by step. So I am just making a very small video so that you can just learn only one reaction at a time and go to the next reaction just after that, or today or tomorrow I will make this another chemical properties of acid, so that you will be very familiar with the chemical properties. At one go I am not going to teach everything, क्योंकि ये आपके लिए भारी हो जाएगा. तो आप छोटा छोटा चीज़ पहले तैयारी कर लो,
और उसके बाद धीरे धीरे मैं विशेष जानकारी आपके समक्ष रखता रहूँगा। ओके, देन वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अनदर केमिकल प्रॉपर्टी। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।